the video, and as long as you see a lot of heads in the video, it's always great. Yeah, nice. Come ahead, you can sit here. I swear I don't bully. The best I could do is make fun of myself. And probably a few dead daddy jokes. Anyone triggered with dead jokes? No, very nice. All of you cold people out here. Okay, awesome. So before I start, can I have a nice round of applause? Can we all kind of wake up? I think waiting for the show, everyone's gone into hibernation, so we need to change that. Are we good with English? क्योंकि मैं हिंदी में बात करने का कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा हिंदी प्रॉपर बॉम्बे वाला हिंदी है. तो sorry, Mumbai. I said Mumbai, I didn't say Bombay. These times are not good for political discourse, as you guys know. Very risky. So how many of you here for the first time at a poetry event? Oh, nice, lovely. Before I start the afternoon, let me introduce myself. My name is Krishna Iyer. I'm a storyteller, writer, poet, and a corporate slave. That answers why I'm here on a Sunday and not doing this on a Monday or something. So I'll be your host for the afternoon, and I'd be telling you a story as we call more people to perform and all of that. Are we good? Yeah? Nice, amazing. Anybody having problem on jokes being cracked on them? On their religion? Okay. No, I have all this confidence to ask these questions because we're not streaming live today. You'll get your video links after the event in a few days, but we are not streaming live today. So in case you feel any disgust to something I say, tell me now itself. Don't put it out on social media because you might feel bad about something small, but people can blow it out of proportion. Do you guys agree? Yes. Awesome. So before we start, can we start knowing each other a little more so that there'll be some more warmth and some more fun? We'll all be comfortable, yeah? How many of you performing for the first time? Oh, nice. Awesome. Two of you, can you come here, like second row if that works? Nice. Because the more the merrier. So the thing is, the whole idea behind knowing everyone in the audience is that always makes you more comfortable, and you also tend to have a lot of fun. So, sir, what brings you to a poetry event on a Sunday afternoon? Are you performing? Yes, I'm performing. Okay. This is the third time I'm performing. This is the third time. Are you from Bombay? No, sir, I'm from Assam. Oh, lovely. You're from Assam. That's so nice. It feels like... no, it was a bad joke in my head. Let's not do that. No, but lovely. So are you here for work or have you moved here for pursuing poetry and stuff? I'm here for like my father's treatment. Oh. Through treatment on his cancer. I'm so sorry. I just like found like a little bit of time and thought to perform here. Lovely. What's your name, sir? I'm Mashood. Yes. Wow, I was reading this name in the list and I was not sure how to pronounce the name. So I was like, I shouldn't end up saying something wrong. But great. So, sir, what brings you here? What's your name? Sanjay. Are you performing? Yes. Is it your first time? Yes. Oh, lovely. Are you nervous? Yes, a little bit. Shit. I was thinking of making you more nervous, but amazing. You're already nervous. So what are you performing? Hindi, English, which language? Hindi poetry. Oh, lovely. What do you do? I am CA and currently working in a bank. Wow. I can relate to you because I'm a corporate slave. I work in a bank. And I can half relate to you because I quit CA midway. So the joke is, it's not a joke. It's my reality, which sounds like a joke. So after my 12th grade, I didn't know what to do with life. I was a commerce grad. So as you all know, how many commerce people out here? My God. And all others are science or arts? Science. My God. Okay, cool. So as you all know, people who have done commerce can do anything in their life, like absolutely anything in their life, because commerce doesn't teach you anything mainstream, apart from everything you already know. So after my 12th, I really didn't know what did I want to do, because I was not that kid who was like, बचपन से सोच रहा मैं बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, मैं ये सब नहीं सोच रहा था. मेरा स्कूल में एक ही था, मैं बड़ा होके हेड बॉय बनेगा स्कूल का, और वो मैं बन गया.
घुस के आगे लाइफ में क्या करने का, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. So everyone was doing BCom, so I was like हाँ let's do BCom, easy कर लेते हैं BCom के साथ. लेकिन टाइम पास का तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है. So all my friends, these very good in studies, scholars जो बोलते हैं वो लोग सारे थे. So they were like हम लोग CA करेंगे. I was like ठीक है मैं भी CA करेगा. मजाक मजाक में I cleared the foundation. I was like now you have to do, there are three parts to CA basically. There's your foundation, then there is your inter and then the final. एंड ये इंटर और फाइनल के बीच में ना एक इट्स लाइक क्रॉसिंग अ डीप रिवर दैट्स कॉल्ड इंटर्नशिप, विच इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ CA. सो एनीवे आई क्लियर द फाउंडेशन. ऐसे मजाक मजाक में मैं क्लियर कर लिया. अब बात है इंटर करने की. Now the thing about inter is these people who do CA, they go for these classes which go 8 hours long. Like they start at 2 in the afternoon, they go till 8 o'clock. Max I had attention in my life was 15 minutes. उसके आगे A grade बकचोदी सिर्फ वही होता था मेरे से. बट देन आई सैट थ्रू दिस क्लासेस एंड ब्ला 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 ब्ला. आई गेव द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंटर. नाउ इंटर हैज 2 ग्रुप्स. आई गेव द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इट. फर्स्ट ग्रुप जो है मेरा 10 मार्क्स से छूट गया. तो मुझे ऑब्वियसली वापस पढ़ के देना था. बट आई हैड अ बंच ऑफ फ्रेंड्स हु क्लियर्ड इट, सो दे वेंट टू आर्टिकलशिप. सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1 अगेन. आई सॉ दीज पीपल हैव द वर्स्ट लाइफ. लाइक एवरीथिंग व्हाट पीपल प्रॉमिस यू, तुम एक बार CA बन जाओ, तुम ये होगा, तुम्हारा वो होगा, सेट हो जाओगे प्रोफेशनली, एकदम सेट हो जाएगा, लड़की मिल जाएगी, बिकॉज इवेंचुअली दैट्स व्हाट द सोसाइटी वांट्स, लड़की मिल जाएगी. करेक्ट. तो आई लुक एट दीज पीपल एंड दीज पीपल हैव द वर्स्ट लाइफ्स इन एवर पॉसिबल. सुबह 5 बजे निकल रहे, भिवंडी भयंदर ये सब जगह पे जा रहे. क्यों? ऑडिट करने के लिए. क्यों? आर्टिकल्स है. इनको क्या करना है? यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड वाउचिंग वेरिफिकेशन. मतलब एक बुक ऑफ अकाउंट्स में 1500 एंट्रीज रहेंगी, उसके 1500 वाउचर रहेंगे. तुम्हारा काम है ये वाउचर इस एंट्री से मैच होता है क्या देखो. एंड आर्टिकल्स राइट, सो ऑब्वियसली दे वांट यू टू स्लॉग. दैट डे आई डिसाइडेड आई कैन नॉट डू इट एंड दस आई एम नॉट अ CA. I mean, this is not some great story and all. It's just because you said CA, so I was like half relate. Right. So you're working in IndusInd. Yes. Nice. I work in AU. How many corporate slaves here? Did I ask this? 1, 2, 3. Usually the kind of people who are turning these days into poets, pehle it used to be engineers who are doing that. Now it's more of corporate slaves who are like social media है, viral होने का chance है, तो कुछ नहीं तो boss के बारे में हम vent तो करके चला जाता हूँ. So only difference with people like us is it happens with some amount of poetry. Awesome. Are you guys ready for a story? Yeah? We start? Okay, lovely. Can I have a nice round of applause before I start? Okay, quickly. There are a few rules that I must tell you. One is just take out your phone and ensure it's on silent. Can we do that? Flight mode even preferable. 2, what do you do when you like a line or something for those who have attended poetry events? Snap. Can we all do it? Yeah? If हिंदी शायरी चल रही है तो तुम वाह वाह कर सकते हो, अगर तुम्हें पता है सही टाइम पे वाह वाह कब करना है. Because I know a lot of people who are like 2 lines later like वाह वाह and everyone's like क्यों कर रहे हैं? So let's try to do that. Given that I'm an English poet, I rarely understand when to do वाह वाह in Hindi शायरी, so it's on you as an audience. The onus is on you. Third, most important rule. Whenever anyone is coming on stage, you have to make them feel like a star. Be it their first time, be it their second time, I don't care, whatever it is. It's our job to make them feel like a star coming up on stage and he's going to perform the best, he or she is going to perform the best piece of their life. Are we all game? Yeah? Awesome. So I'll start with a story. Vibe check, full marks. Right. So, as a kid, I lived a lot of stories. A lot means a lot of stories. Prime reason being one, I was extremely overconfident. There's a lot of confidence in me for no reason. I don't know what did I achieve. देखो बचपन में I looked like a proper वानर. I think with age, the best thing that has happened to me is at least my looks have evolved slightly. But if you look at my photo as a kid, I literally looked like a monkey. Or the other thing is a duckling. Both of them, that's about it. But कॉन्फिडेंस बहुत था. किस बात का पता नहीं. ऐसे भी नहीं था कि मैं स्कूल में फर्स्ट रैंक वगैरह आता था, बहुत हीरो था, नहीं. कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा था.
तो उस चक्कर में I was always that guy, if I felt like I want to do something, I would just do it. I wouldn't think twice about it. Consequence क्या होता है? Precisely answers why I'm here. But then it is like, consequence क्या होता है? Just do what you want to do. So this once what happened, I was in a friend society. She was making me meet all her friends and all of that. So I was like, I met everyone, and given that I since childhood have been an extrovert, like ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा भी बात करूँगा. You guys would have realized it when you heard the CA story. कोई ज़रूरत ही नहीं था उतने story का. You were also like मैं poetry सुनना है, but ये क्यों पका रहा है? Anyway. So I've been an extrovert kid, always talking much more than I would want to. And one thing that I've thrived upon always is validation. The beauty about overconfidence is the next thing that you want the most is validation. So क्या हुआ हम यहाँ पे she made me meet all her friends and all that happened. But there was this one girl sitting over there. Sat a little aloof and coy, very beautiful, very, very, very beautiful. She had a sweet dimple on her left cheek, and her hair was straight, falling on one side, and she looked very pretty, very, very pretty. And she was not at all talkative, or she was not too bothered. Now me, being the guy who's filled with all this overconfidence, restlessness, and the need for validation is like, सबने बात किया, उसने मेरे से बात क्यों नहीं किया? How does that work? ऐसे नहीं चलेगा. So then I walk up to her, I look at her, and I'm like, क्यों dimple? She's like, thanks. And then I'm like, आगे क्या बात करें? नहीं पता. So then I went back and I sat in my place. I'm asking my friend, and who's she? And she's like, Krishna, don't even think about it. No. I'm like, Arey, why? Listen, she's 3 years older than you. Don't even think about anything. I'm like, why is age a problem in love? Love should be with no number barriers. And she was like, सुन ये सब ज्ञान अपने पास रख, but नहीं. Given how overconfident I was as a kid, obviously I figured a way out to find her number. Now, this was that point in time when you needed to be very clear about what you send in a message. So then I sent her a message saying, hey, hi, Krishna here. You remember I had come to this friend's place? I was sitting over there. Tuck, send. कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं. Send. She replies back in a while. उसने बोला था ऐसे you will message about this. Okay. So I was like, great, so now you know, so let's meet. Send. I'm not thinking at this time, it's just a blood rush that's running in me. So then she replied back saying, why should I meet? You like me. So I was like, ooh, it's playing games and all, acting tough about it. So then I replied back immediately without thinking too much. मिलेंगे नहीं तो प्यार कैसे होगा? Send. एक बार सोचा नहीं, दूसरी बार सोचा नहीं. Because see, get it. This is that period when there were only two faces. You like someone, you think of babies with them. You don't have this beautiful concepts that you have these days that starts with crush to breadcrumbing to situationship to love to thinking maybe love. No, there's that one more thing which was there. I forgot. Moon something. Do you guys know it? No, you don't know it. How many millennials in the house? People born before 1997. Does 97 comes? Yeah. The lasts of millennials, so it's kind of that. Okay, and how many Gen Zs? Nice. Lovely people, y'all. Lovely people. Oh no, so it was, I think the last time I was hosting one of these open mics, I was cracking all these Gen Z bashing jokes for no reason because maza aa raha tha, and there were only 2 people in the audience who were really laughing on these jokes. After a while, I thought something's wrong. Let me just take a vibe check of this whole scene. And then I asked the same question. And only those 2 people were millennials, and there were about 25 people in the audience, all of them Gen Zs. So, better to be careful. Anyway, coming back to the story. So I sent her a message stating that मिलेंगे नहीं तो प्यार कैसे होगा? तुम देख रहे हो? इतने देर इंग्लिश चल रहा था, अभी हिंदी, प्यार की बात आ गई, हिंदी पे आ गए हम. Because grown up watching Bollywood. तो और कोई तरीका ही नहीं है. So then she did not reply for a while. Now you don't have too much time. It's not WhatsApp that you can send 10-15 messages. 35 rupees, 350 SMS. You can't hit, you know how much you have for one day. You're very clear about that.
So then I was like, stakes बढ़ाते हैं थोड़ा. I sent her a message. Meet me thrice. If you don't feel like the fourth time, I'll not ask you again. इतना कॉन्फिडेंस क्यों है मेरे को कोई आइडिया नहीं है. Nor does she know me, neither do I know her. So then she was like, after that she finally replied, saying, okay, let's see. I was like, oh, she's agreed to it. Stakes और थोड़ा बढ़ाते हैं. So I was like, if the fourth time you want to meet me, then you will give me a Cadbury. How many of you here are from state board schools? SSC board, basically. Okay, lovely. When you were in school, when you were in your early teens, 8th grade, 7th grade, what did Cadbury mean? First kiss. Okay. So a Cadbury, don't judge, but a Cadbury meant a peck on the cheek. That was the idea. So then we finally decided to meet. And we decided the first time we were going to meet. But I'll tell you about our meeting after the first performer. Does that work? Yeah? Can we start clapping for Mashood? Nicely, louder. Come on, come on, come on. Okay. Hello everyone. I'm Mashood Khariduraman. I'm from Assam. So, first of all, I would like to start with a little bit of personal note because I'm from Assam and we have recently lost one of our real gem, one of our lovely artists, that is Jubin Garg. And it was an uncertain death. So we are still calling out for his justice. So I would like to call out justice for Jubin Garg from this platform. Now, thank you. मैं बेसिकली उर्दू नज़में लिखता हूँ जो फ़लसफ़े के ऊपर होता है. फ़लसफ़े दैट मीन्स द फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंस. तो उसी के ऊपर दो नज़में आज आप लोगों के सामने पेश करूँगा. पहला जो नज़म है उस नज़म का उन्वान है खिलाफ ज़ाब्ता. इट्स मीन्स अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द लॉस. इट्स नॉट अगेंस्ट द स्टेट लॉस बट अगेंस्ट द रूल्स विच डिफाइन द एग्जिस्टेंस. सो आई एम अगेंस्ट दैट रूल्स, अगेंस्ट द लॉस. खिलाफ ज़ाब्ता. मैं खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ हूँ तेरे हर साजिशों के दायरे में नहीं आता. तू सोचता होगा मैं इंसान हूँ, फिर मैं क्यों नहीं मानता. गलत है, गलत है, मैं तेरे हिस्से में नहीं आता. मैं हूँ तो बस तेरे हिस्से की ये खाली एक जिस्म. हक है तुझे तो ले, मैं आज़ाद करता हूँ. मेरे हिस्से में जो मैं हूँ वो मैं रख लेता हूँ. फिर ये हक जताना मत, फिर ये हक जताना मत मुझे इंसानों के दायरे में नहीं आना. मैं खिलाफ हूँ तेरे हर साजिशों के दायरे में नहीं आता. मैं हूँ अब इन हवाओं के हक में, मैं हूँ अब इन हवाओं के हक में. मैं खुद को ज़मीं से बांट लूँगा. मुझे आसमां से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे फरिश्ता सा नहीं बनना. मैं हूँ अब इन हवाओं के हक में. मैं खुद को ज़मीं से बांट लूँगा. मुझे आसमां से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे फरिश्ता सा नहीं बनना. मैं खिलाफ हूँ तेरे हर साजिशों के दायरे में नहीं आता. हकीकत से दूर लेके खुद को मुझे तबेदार अब नहीं बनना. तबेदार मीन्स डिपेंडेंट. हकीकत से दूर लेके खुद को मुझे तबेदार अब नहीं बनना. खिलौना है ये खेल भी मैं अब समझ चुका. आज़ाद हूँ मैं इनसे, आज़ाद हूँ मैं इनसे. मुझे खामियाजा अब नहीं भरना. मैं हूँ शफ़क़ के साये में, द रेड ग्लो ऑफ सनसेट. मैं हूँ शफ़क़ के साये में, रक़्स कलम से मैं हूँ हवाओं में अब लिखता. मैं खुद को देख चुका. रक़्स कलम मीन्स व्हेन वी राइट वी मूव आवर पेन, राइट. So that is signified as the dancing move of that pen. मैं हूँ शफ़क़ के साये में, रक़्स कलम से मैं हूँ हवाओं में अब लिखता. मैं खुद को देख चुका, मैं तेरे हिस्से में नहीं आता. मैं खिलाफ हूँ तेरे हर साजिशों के दायरे में नहीं आता. मैं हूँ अब इन दरख्तों के हक़ में खड़ा. दरख्त मीन द ट्रीज. मैं हूँ अब इन दरख्तों के हक़ में खड़ा. मुझे तुम परिंदों के हिस्से में गिन लेना. मैं यहाँ के किसी भी पिंजरे में कैद नहीं. मुझे आदमजात का कोई हिस्सा नहीं बनना. मैं खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ हूँ तेरे हर साजिशों के दायरे में नहीं आता. तू सोचता होगा मैं इंसान हूँ, फिर मैं क्यों नहीं मानता. गलत है. शुक्रिया. दूसरी जो नज़्म है उस नज़्म का उन्वान है एक ख्वाब. इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम एलेगरी विथ लॉट ऑफ एब्सर्ड एलिमेंट्स. तो आप अंदाज़ा लगाइएगा. एक ख्वाब. उलझे हुए कुछ रंगों में हम
और कुछ आवाज़ें तंग करती है। उलझे हुए कुछ रंगों में हम और कुछ आवाज़ें तंग करती है। हमें तो रात भर अजीब व गरीब सपने आते हैं। शाखों पे सजी फूलों की जमाल, जमाल मीन्स खूबसूरती, शाखों पे सजी फूलों की जमाल कुछ चेहरों पे मुरझाती है। सुखनवरों के पास कोई और काम नहीं है। सुखनवर मीन्स पोइट्स, सो दे ट्राई टू कंपेयर द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर विथ ब्यूटी ऑफ लाइक ह्यूमन बीइंग, राइट? तो दे ट्राई टू डिस्टॉर्ट द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। सुखनवरों के पास कोई और काम नहीं है, जाने किस तकाजे में है यहाँ के हर दीवार सफ़ेद होते हैं। गम गुसार यहाँ कोई नहीं, गम गुसार यहाँ कोई नहीं, सभी है मुसाफिर, बस कभी रास्ता पूछा करते हैं। गम गुसार यहाँ कोई नहीं, सभी है मुसाफिर, बस कभी रास्ता पूछा करते हैं। खुल्द तक जाने की बस एक ख्वाहिश, खुल्द मीन्स हेवन, खुल्द तक जाने की बस एक ख्वाहिश जो यहाँ हर कोई रखते। मुकद्दस से पामाल है सभी, फिर भी बंदगी उसी की करते। मुकद्दस से पामाल, दैट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ हॉलीनेस, राइट? Spirituality, holiness, there's a two different thing, but we are distorted, we are like disturbed by the thing of holiness. मुकद्दस से पामाल है सभी, फिर भी बंदगी उसी की करते हैं। यहाँ माहे कामिल कोई नहीं चाहता, no one wants to see the full moon. यहाँ माहे कामिल कोई नहीं चाहता, गुजरे रात तो बस बादे नसीम चाहते, the early morning breeze. So that's all. जाते जाते बस कुछ और पंक्ति, is there a time limit? Yeah, there is a time limit. Okay, last few lines. Last few lines. We're done? Yeah. Okay. No problem. Thank you. I love your pronunciation of the word गलत. Not everyone does it that well. सही, तलफ़्फ़ुज़ सही, बढ़िया है आपकी. Talaffuz is pronunciation, right? Enunciation, technically. Can we have another round of applause for him? So nice. I think one of the most beautiful things about a lot of Hindi artists is the mixture of Urdu in the writing of poetry, and something even better that you also did is explanation. Because the bane of living in a cosmopolitan city is that you know a bit of every language. It's just like Bombay's food. There's no authenticity. Everything that you have over here is all a mixture. But lovely, nice performance. Thanks for coming here and keep performing, please. Okay, so coming back, we were meeting for the first time. Are we all there? Yes. Awesome. So we were meeting for the first time. Now this was a walk date. In a matter of 2 hours, I kept talking about myself because she had to know me, right? So I just kept talking about myself for the longest time. And towards the end of it, she was like, I love how much you love yourself. And I was like, don't worry, you also will one day. Because a lot of confidence. So this happened. And she agreed to meet for the second time as well. But the second time, I was a listener, guys. I was a patient listener. In a matter of 2 hours, I spoke only for 90 minutes. I was a foolproof listener this time. But I also found out she liked flowers. She loved reading. She liked Ruskin-bound books. And she was a very coy person, very, very sweet. Not too loud at all. This time when we left, we hugged, which hadn't happened the first time. So there were a bit of expectations from the third time. Yeah? Are you with me? Yes. Awesome. But now let's call the next performer and then come back to what happens over here. Are we ready for the next performer? Yes. Can we start clapping? Can we start clapping for Namrata? Keep clapping, keep clapping, keep clapping. I mean, I don't ask people to record because I don't want them to be distracted by anything else. This show is being recorded. I just needed some part of it as well. But thank you, I appreciate it. Okay. Hi everyone, मेरा नाम नम्रता है. मैं बॉम्बे में अब 3 महीने पुरानी हो चुकी हूँ. And it's been going well so far. I quite like it. The piece that I'm going to perform for you, it's called Chitti or Postcard. Just one second. I hope you like it.
चिट्ठी लिखी नहीं है मैंने अरसों से किसी को, और तुमसे जो भी रिश्ता है मेरा उसके मायने में पोस्ट कार्ड अच्छा विकल्प लगा मुझे। चिट्ठी या खत लिखते लिखते दिन का और दिल का बही खाता बन जाता है, शायद इसीलिए उसे खत कहते हैं। पहले ये पूछना कि तुम कैसे हो, फिर बताना कि मैं कैसी हूँ, फिर थोड़ी शरारत, थोड़ा प्रेम, और फिर हर तरह से बिरह को बताना। दूर होने की पीड़ा का सफ़र एक खत ही तय कर सकता है। अल्फाज चाहिए होते हैं मन के मीत को सीने की पीड़ा बताने के लिए, उन्हें ये महसूस कराने के लिए कि उस खत में सिर्फ हिस्सा भर ही है आठों पहर महसूस होती बेचैनी का। खत दिल को खोल कर रख देता है, तो खत में दिल बह जाता है, प्रेमी का होकर रह जाता है। पर तुमसे मेरा रिश्ता वो बन नहीं पाया। हम मिले, हम में मोहब्बत हुई, पर हम प्रेमी बनने से पहले ही बिछड़ गए। या यूं कहूँ कि बिछड़ने का सिलसिला बस शुरू ही हुआ है हमारा, हम बिछड़े नहीं हैं अभी तक। तो जो प्रेमी ना बना हो उसे खत नहीं लिख सकती। कैसे दिल खोल कर दर्द सारा बयान कर दूं, कैसे अपने सीने की पीड़ा बता दूं, जब हमारी पीड़ा एक दूसरे से इतनी अलग है। इसलिए खत नहीं, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें बताने के लिए घंटों कागज़ कलम लेकर बैठी रही। पोस्ट कार्ड ये नहीं कहता कि मैं सोच सोच कर तुम्हें लिख रही थी। पोस्ट कार्ड में क्षमता नहीं होती बिरह को लिख पाने की, उसमें जगह कम होती है ना। उसमें जगह कम होती है तो स्वांग रचाना आसान, कि हाँ तुम्हें याद किया, तुम्हारे बारे में सोचा, तुमसे कुछ तो कहना चाहा, पर सब कुछ नहीं। अब नहीं, हम प्रेमी नहीं हैं ना। पर अल्फाज खत पर हो या पोस्ट कार्ड पर, लफ्ज़ों की लय से सीने की पीड़ा और खुशी दोनों का पता चल जाता है। तो क्या करूं? लिख दूं कि तुम्हें याद किया, तुम्हारी बातें अकेले में सोचकर हंसी, तुम्हें जाता याद करके रोई, कि तुम ख्वाब में आए थे, कि तुम ख्वाब में आए थे, पर ख्वाब में भी हम प्रेमी नहीं थे, हम बिछड़ रहे थे। बिना प्रेमी बने बिछड़ते कैसे हैं। मुझसे नाम भी नहीं जुड़ा तुम्हारा, और मुझ पर मोहर भी तुम्हारे नाम की लग गई। तो क्या करूं, कैसे लिखूं, कहाँ स्टैम्प लगाऊं पोस्ट कार्ड पर, ताकि ये ना लगे कि बहुत सोच समझ कर लगाया है, ताकि ये ना लगे कि पोस्ट कार्ड में क्षमता ना होने के बावजूद उसमें जगह बनाने की कोशिश की है मैंने। तो बस इतना तुम्हारे लिए। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारी नम्रता। हम प्रेमी नहीं है ना। थैंक यू, थैंक यू. Thank you so much. I hope you enjoyed it. Before I get off the stage, I just take 20 seconds. I'm very new to this, and I'm trying to make a space for myself. And I will count myself as this surferi who's planning to do a show from 3 months from now. So I'm planning to do my debut show 3 months from now. And I am on this experiment for this next 3 months where I'm on a quest to sell 150 tickets. It's mad. I think it sounds mad. But I want to do this because it's an experiment for me. So if you want to see how this goes, 3 months from now, my debut show, 150 tickets. Check out if I do it at tumhari.namrata. Thank you so much. Thank you very much. Really appreciate it. Wasn't that so sweet? Can we have another round of applause for her? यार तालियों में कंजूसी मत करो. It was a lovely piece. It's a coincidence that I am touring with a show called Letters. Yeah. So I did my first in Bombay just recently. Here only. This was the space where we did it like a month ago. Now I'm doing a show in Bangalore and a show in Pune in December. It's called Letters. It's exactly on these lines. So do you guys have friends in Bangalore? Yeah. Please tell them there's this show called Letters that's coming up on the 6th of December.
Oh no, because this is something we need to do. Like how she just mentioned, she's on the quest to sell 150 tickets. I'm on the quest to sell 50 tickets for Bangalore, which is going on. Yeah, we did. I think we managed Mumbai. We sold about 45 tickets, but Bangalore is a relatively new space. So, given that we are in this conversation, I will take this moment. So, it'll be very helpful if whenever you guys after this show get home or open your phones and go to Instagram. And my name is Krishna Iyer. So it's not more about following me. It's more about if you can just reshare this post that there is a show happening in Bangalore. It's called Letters. That'll be very helpful because the fact is I'm Mumbai based and I hardly know people in Bangalore and not viral. Yeah? Nice. So, it was finally time for the third meeting. Now this had to be special. It couldn't be the same walk place you meet, or it couldn't be a walk date. So, how many here from Bombay? Oh, nice. So, do you know the last geographic boundary of Bombay called Mulund? It's just before Thane. So, I lived there. That's where I grew up. So, Mulund का ना एक वर्ल्ड बेस्ट आइसक्रीम पार्लर था जहाँ स्कूल के बच्चे जाते थे कॉल्ड प्रभुज आइसक्रीम पार्लर सो आई वाज लाइक दिस टाइम वी विल मीट देयर सो शी अग्रीड टू इट एंड दिस इज द थर्ड टाइम वी आर मीटिंग दिस कुड बी द लास्ट टाइम दैट वी आर मीटिंग सो देन वी बोथ रीच ओवर देयर एंड वी मीट ईच अदर एंड देन शी orders for some milkshake. I order for this ice slush. You know what's a slush? Basically a lot of crushed ice in some kind of juice. We order that. And then today, I'm sitting in front of her, quiet. Pin drop silence. After 5 minutes, she breaks the silence asking, what happened? Today you're not talking too much. To which I tell her, this might be the last time we're meeting. I don't know if I'll ever get to see you again, so I don't want to miss even a single moment of looking at you or adoring your looks. You might choose to be with me or you might not choose to be with me. Whoever you will choose to be with would probably be the luckiest man alive. But I don't want to end up like a chatterbox who just misses out on everything, being lost in himself. Today I shall be lost in you, observing you. Pin drop silence. Both don't know what to do. I'm chewing on the straw that I have in my hand and she's completing her milkshake because she was not prepared for this. We were quiet for another 10 minutes. Then finally it was time to leave. Now here I am extremely restless. I really don't know where this is going because the second time we met, it seemed like a parting hug, but this time we were like sitting away from each other and all of that, and there has not been real conversation, and I have not kind of gone and tried too hard to woo this woman this night. So then we get out of the ice cream parlor, and right when she starts looking for rickshaws because she's got to leave home. So I'm also looking for rickshaws, she's also looking for rickshaws. So there's a rickshaw stand over here there where we're standing, and we both haven't uttered a word yet. But I'm just hopeful for no reason because I don't know why. I'm like, wait, I'll catch a rickshaw for you, I'll help you, blah, 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 blah. I do this, I do all of this. And it's about time for her to leave. Abhi tak rickshaw to pakda nahi hai. But then she's like, okay, I'll leave anyway. So then she gives me a hug. Now this hug is a little longer than the usual, than the second time. And right when we are parting from the hug, she gives me a Cadbury and she jumps into the rickshaw on the line and she leaves. Bas. That's my story. And that is how we dated for some time. Yes. Are we ready for the next artist? So this person is coming up for the first time on the stage and is performing for the first time, as he said. Can we start clapping for Sanjay? Yeah? Hello. So, myself Sanjay, I'm performing from the first time. So, बात लेटर से ही शुरू करते हैं जो अभी चल रहा है. तो आज अलमारी में कुछ पुराने खत मिले हैं. पढ़ने का मन तो नहीं है पर तुम्हारे सारे शब्द मिले हैं.
आज फिर से तेरी मेरी वो पुरानी कहानी याद आ गई, जो मैंने बर्बाद की थी वो नादान जवानी याद आ गई। सो अनदर वन इज़, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि लड़कियां हिंट दे रही हो और आप प्रपोज कर दो, पर हम वो ना आता है कि क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया है, क्योंकि तुम्हारी आँखों ने तो हर दफ़ा उसका इजहार किया है, तुम्हारे कदमों ने तो हर दफ़ा मेरा ही इंतज़ार किया है, और तुमने भी तो अपने सपनों में सिर्फ मुझे ही निसार किया है। तो जब भी मैं पूछूं कि क्या तुमने मुझसे प्यार किया है, तो तुमने क्यों हर बार इनकार किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी की ज़िंदगी में कुछ करना होता है, हीरो बनना होता है, बट वो चीज़ ही सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उस पे है कि जिस घर को सजाना है उस घर का मैं सीलन बन गया हूँ, कि जिस घर को सजाना है उस घर का मैं सीलन बन गया हूँ, बनना था जिसकी ज़िंदगी का हीरो उसकी ज़िंदगी का विलन बन गया हूँ। फिर एक होता है कि गॉड की क्या ज़रूरत है। सो अगर ख्वाहिशें हकीकत होती तो सपनों की क्या अहमियत होती, कि अगर ख्वाहिशें हकीकत होती तो सपनों की क्या अहमियत होती, अगर जो चाहा वो मिल जाता तो खुदा की क्या ज़रूरत होती। अनदर वन इज़ के स्कूल में बैठे हैं, बज में बैठे हैं, प्यार हो गया, कि अब तेरी मेरी दोस्ती कुछ अलग लगने लगी है, कि अब तेरी मेरी दोस्ती कुछ अलग लगने लगी है, अब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगी है, कि अब तू सामने से कहेगी या मैं कह दूँ, तेरी ख़राब बातें भी अब मीठी लगने लगी है। फिर बहुत बार होता है कि आप बिछड़ रहे हो और आपके पास कुछ है भी नहीं बात करने को, तो कि अब जा रही हो तो याद रखना, कुछ ना हो बोलने को तो भी फ़ोन पे 2 मिनट तो बात करना, कि अब जा रहे हो तो मुझे याद रखना, कुछ ना हो बोलने को तो भी फ़ोन पे 2 मिनट तो बात करना, तुम्हारे हाय हेलो हे का इंतज़ार करेंगे व्हाट्सएप पे, तुम रिप्लाई में सबसे पहले मुझे, मेरे बाकी सबको मेरे बाद रखना। सो नेक्स्ट वन इज़ कि वन सेकेंड, कि हाँ मेरी किस्मत में लिखी तुझसे जुदाई है, कि हाँ मेरी किस्मत में लिखी तुझसे जुदाई है, पर मेरी दिल की डायरी में तो अभी भी तेरी ही सिहाई है, और 20 तारीख से तो वो डायरी भी कोरी है, क्योंकि उस दिन उसकी विदाई है। थैंक यू सो मच, दिस इज माय टाइम। यार तुम तो फर्स्ट टाइम जैसे लग ही नहीं रहे थे, यू आर फार मोर कॉन्फिडेंट। कैन वी हैव अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? I think one of the best things about Hindi, or for that matter any regional language, be it even Marathi or any other language, is that rhyming is very easy. English is a comparatively stiff language. Have you realized that? Like जब he was reading also at this time, I was like काफ़ी सारी चीज़ें आपने राइम कर ले इतने सिंपल वे में, बहुत सही था यार। इन इंग्लिश यू कैन डू दैट। इंग्लिश यू नीड टू रियली बी थॉट, you need to have it thought through very well. This is exactly what English does to you though sometimes. Awesome. Given that I was talking about letters, you guys mind I'll do a letter for you guys? Are we up for it? Okay, amazing. Awesome. 20th February 2021. Hi love. It's been more than 20 days since the last time we met, and 15 days since the last time we spoke. I'm learning to curb my emotions and archive my impulses. You have become an intermittent visitor. On some days, an annoying notification. I struggle to look for the unsubscribe button, but when I find it, my fingers freeze. I breeze through our memories and the heart chooses to hold on for a little longer. You see, the heart is a delicate being. It is unaware of the mind games. Mine has chosen to wait for you just like dusk awaits dawn, like earth awaits the rain. I carry my heart on my sleeves like a mill worker waiting for the last bus of the night to get home. The morning returns to let the night sleep in its embrace, but you
choose to keep me waiting like certain countries the sun never bestows its light upon. The sound of my breaking heart is the silence of a famished kid. I curl into helplessness, reminiscing a memory, convincing myself that this is just a dark phase, it's just a gloomy day, that the night is longer than the day. It shall end and you shall return. But sometimes, hope is like a pair of rollerblades in the hands of a handicapped person sitting on a wheelchair. Absolutely useless. But the mind, it seeks comfort in waiting. So I light the lamp, watch another day pass by, and wait in your absence. Thank you. So this is a glimpse of a longer show. There's a lot more fun also in this. It's not entirely morose for all of you. But are we ready for the next artist? Can we start clapping for Shruti? Keep clapping, yeah? Hello everyone, my name is Shruti and even I am performing for the third time. So what I believe is there is a concept called as, especially boys believe in कि most probably लड़कियाँ gold digger होती है या पैसों के पीछे भागती है. I have seen मेरे experiences से. And already we were talking about Gen Zs and millennials. I believe हर 2000 के बाद born हुआ not everybody is Gen Z. There are some people who are also in that old school fantasy. They still believe in that, and I am one of the girl. I am an old school lover, we can say. तो उसी पे मैंने कुछ लिखा था कि तुम राम बन वनवास चुनना, मैं सिया सा साथ निभाऊंगी. तुम कृष्ण बन त्याग चुनना, मैं राधा का नाम बन के तुमसे जुड़ जाऊंगी. तुम शिव की तरह कठोर जीवन चुनना, मैं सती बन तुम्हारी तपस्या करना चाहूँगी. मैं उस हर कठिन परिस्थिति में भी तुमसे हम बनकर तुम्हारा साथ निभाना चाहूँगी. और साथ निभाने का मतलब होता नहीं कि मैं सिर्फ खड़ी रहूँगी पीछे तुम्हारे, बल्कि दो से एक बनकर हर मुश्किल को दूर हटाने का इरादा रखना चाहूँगी. मैं बस वादे करना नहीं चाहती, बड़ी बातें करना नहीं चाहती. असल ज़िंदगी के कठिन वक्त से लड़कर एक अनुभव का हिस्सा बनना चाहूँगी. मैं तुम्हें ये महसूस कराना चाहूँगी कि हर लड़की महलों की रानी बनना नहीं चाहती. मैं टूटे मकान में भी खुशी से रहकर प्यार की कहानी तुम्हारे साथ जीना चाहूँगी. कोल्ड कॉफ़ीज़ और डिनर डेट वाले ज़माने में तुम्हारे साथ एक अदरक वाली चाय बनाकर पीना चाहूँगी. स्विगी ब्लिंकिट वाले ज़माने में अपने हाथों से खाना बनाकर तुमको खिलाना चाहूँगी. मैं एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वाले ज़माने में तुमने लिखे हुए पन्ने पढ़ना चाहूँगी. आईफोन की जगह तुमने दिए हुए कंगन पहनना चाहूँगी. हमेशा फैंसी पार्टीज से ज़्यादा तुम्हारा हाथ पकड़कर मंदिर में मत्था टेकना चाहूँगी. मैं आजकल वाली टेम्पररी लव स्टोरीज से ज़्यादा अपने मम्मी पापा की तरह ठीक एक परमानेंट रिश्ता बनाना चाहूँगी. ये जेंजी ज़माने में ओल्ड स्कूल वाला प्यार निभाना चाहूँगी. और आखिर में ज़िंदगी भर ना सही मैं कुछ पल तो तुम्हारा साथ निभाना चाहूँगी. एंड देन थैंक यू. और बस ऐसे ही मतलब आई एम नॉट अ कॉन्स्टेंट राइटर. मैं मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा ही लिखती हूँ. मैं कभी कभार लिखती हूँ जो भी फेजेस से आई एम गोइंग थ्रू. एंड इवन दिस इज़ न्यू फॉर मी. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. एंड ऐसे ही कुछ आई वॉज गोइंग थ्रू अ रफ फेज़. उसमें भी मैंने कुछ लिखा था कि जिससे मोहब्बत थी उससे कहानी कभी पूरी हो ना सकी. और जो मुझसे प्यार कर बैठा मैं उसकी कभी ना हो सकी. ये इश्क के हादसों ने यूँ बदल लिया मोड़ मेरे दिल का. एक ज़माने में फूल हुआ करती थी, अब न जाने पत्थर सी हो बैठी. थैंक यू सो मच. I love Gen Zs who despise being Gen Zs. Firstly, another round of applause for her. What a lovely performance.
And accept that you're a writer. Don't hesitate over the fact that I write sometimes. You're a writer. Everyone who writes is a writer. So let's all accept that. The fact that you've come on stage over here to perform something means you have written something, you are a writer. Nothing, absolutely nothing needs to tell you or certify the fact that you're a writer. Can we all agree on that? You could write anything. You could absolutely write anything. Because, the funniest thing is, usually we call ourselves as poets or storytellers. We don't start with calling ourselves a writer. This is something which once upon a time I spoke to some writer, some great writer, and they brought out this point specifically. And that's when I realized we need to bring about a change in our own mindset first and accept that we write. Good, bad is बहुत दूर की बात. Let's just think about the fact that ABCD भी चालू किया था तभी and का spelling भी गलत लिखा है हमने. Do we all agree upon that? Yes. Awesome. Coming back to the Gen Z millennial bit. Like I was saying, love Gen Zs who despise being called Gen Z and are living this fantasy of being millennials. But no, sweet. I'm not targeting you, don't worry. I am more scared than you are. Awesome. I actually forgot the name of the next artist, so give me a minute. I will see and come back. Before that, I had a question though. I should not forget the name again, but still. Nazara. How many of you know Radhe Krishna's love story? How many of you know Rukmini Krishna's love story? Now tell me which one do you support? I love tearing apart the room like this. It's a lot of fun. Because... That is too much. Then I'll have to put up another show of my own. So for whoever knows it, I'm asking them. Okay, I'll leave this with you to think and we'll do this the next when I come up again. And you can tell me which side you're on. There's no judgment. It's just a pure choice. Yeah, can we start clapping for the next artist? Danish. Can we have Danish on stage? Aye. दानिश और मैं सिर्फ देखने आया था, परफॉर्म करने नहीं आया था, पर उन्होंने बुला लिए. So, मैं स्टार्ट करता हूँ. एक शायरी है तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये दिल कोई चीज़ नहीं, उसका दाम मत पूछ, कुछ लम्हे साथ में बिता ले, काम मत पूछ. ये दिल कोई चीज़ नहीं, उसका दाम मत पूछ, कुछ लम्हे साथ में बिता ले, काम मत पूछ. मोहब्बत में तो हार जीत होती रहती है, मोहब्बत में तो हार जीत होती रहती है. तू जीत भी जाए अगर तो इनाम मत पूछ. मोहब्बत में तो हार जीत होती रहती है, तू जीत भी जाए अगर तो इनाम मत पूछ. दिन भर तो मुस्कुराना पड़ा महफिलों में, दिन भर तो मुस्कुराना पड़ा महफिलों में, मगर कैसे बीती ये मेरी शाम मत पूछ. दिन भर तो मुस्कुराना पड़ा महफिलों में, मगर कैसे बीती ये मेरी शाम मत पूछ. तू पूछ मुझसे मेरी नाराज़गी का सबब, तू पूछ मुझसे मेरी नाराज़गी का सबब, मगर कितने पी लिए है मैंने जाम मत पूछ. तू पूछ मुझसे मेरी नाराज़गी का सबब, मगर कितने पी लिए है मैंने जाम मत पूछ. सारे ही मुसाफिर है ये साथ उठने बैठने वाले, सारे ही मुसाफिर है ये साथ उठने बैठने वाले. तू वक्त भले गुजार ले सबके साथ, पर किसी का नाम मत पूछ. एक्चुअली मेरा हाथ काँप रहे, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ. तो एक 4 लाइन और है कि बड़े नाखून गंदे कपड़े, ये मेरे बिखरे हुए बाल तो देख. बड़े नाखून गंदे कपड़े, ये मेरे बिखरे हुए बाल तो देख. और कितना बर्बाद करेंगी ज़िंदगी, तू मेरा हाल तो देख. मेरे सपनों को कुचल कर आगे बढ़ गई जिम्मेदारियाँ, मेरे सपनों को कुचल कर आगे बढ़ गई जिम्मेदारियाँ. तू
तू मेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा मलाल तो देख। अगर मोहब्बत समंदर है तो वो शख्स किनारा जानता है। अगर मोहब्बत समंदर है तो वो शख्स किनारा जानता है। वो मेरी हर कमज़ोरियों का सहारा जानता है। बुलाता है, घुमाता है, रुलाता है और फिर सुलाता है। बुलाता है, घुमाता है, रुलाता है और फिर सुलाता है। इश्क के हर रास्ते पर वो गुजारा जानता है। ज़रा सी दौलत क्या आई जनाब के मिजाज बदल गए। ज़रा सी दौलत क्या आई जनाब के मिजाज बदल गए। दानिश कितना बदला कितना नहीं ये मेरा खुदारा जानता है। थैंक यू। बहुत सही पढ़ा यार आपने। ट्रिक अच्छा था, मैं सुनने आया हूँ, नाम तो दिया था पढ़ने के लिए। वाह, ये बहुत सही है। डोंट किल मी, आई डिडंट पुट ऑन। So where we at? Radhe Krishna or Rukmini Krishna? Radhe Krishna. Okay. Everyone's Radhe Krishna? Rukmini Krishna. Who all are Radhe Krishna? Okay, why? Random conversation है, कहीं नहीं जा रहा है. We can just talk about it. It's a thought that I have put through because someone read about Radhe Krishna's love story. So I'm asking why Radhe Krishna or why Rukmini Krishna, whoever is on Rukmini Krishna's side. हाँ जी बताइए. रुक्मिणी कृष्णा अधूरा रह गया. राधे कृष्णा पूरा कब हुआ? आप किस साइड में हो? हाँ, राधे कृष्णा, दैट्स व्हाई. त्याग करते हैं उन्होंने. ओके. एनीबडी एल्स विद एनी अदर रीजन? क्योंकि उसमें आपको प्रेरणा मिलती है कि प्रेम किस तरह किया जाता है. बट आई डाउट इफ एनीबडी वुड वांट लव दैट्स नॉट फुलफिलिंग इनफ टू स्टे विद देम. एंड आई थिंक टू कमिट, व्हिच इज व्हाट रुक्मिणी एंड कृष्णा गॉट, वाज ईच अदर्स टाइम एंड ईच अदर्स कमिटमेंट, एंड दैट इज व्हाट एवरीबडी वुड वांट. सो इट्स नाइस टू लर्न फ्रॉम राधे कृष्णा, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस वांट रुक्मिणी कृष्णा. फेयर जी. Radhe Krishna. Like the saying goes, it's always good to be a man's first love and a woman's last love. Anji. So it's like there's a concept. So I'm very sorry, but I'm part of ISKCON. So Oh, I should have been careful before asking. no, it's a different story. It's a different story. So basically, Radha Krishna was not a plan, part of plan. So Radha Krishna separate hona was not a point because they were together. Radha Krishna is one soul, no? So Krishna, like it's Radharani is Krishna's like half, like Oh, right. It's the same concept. So how can you marry your own self? It's like that. So Rukmani was actually Krishna's love for whom he used to know. उन्होंने एक स्टोरी में भी चेस किया था, अर्जुन को लेके गए थे, and then he was like Interesting. हम जाके उनका सामना करते हैं, रुक्मणी को वहाँ से लेके आते हैं. That was the story. Oh, right. That's so nice, sir. Thanks that you told us about it. What's your name? Varun. Can we hear it once for Varun? Sorry? I don't know anything about Radhe Krishna or Rukmani Krishna. It seems like I know almost everything now. Exactly. No. What I really appreciate about Varun is he didn't get pissed off over us talking like ignorant people. He was very cohesive about our understanding and he put it down to us in the way we'll understand. And it's so important to have such kind of people in an open setup at least. And also the fact that we learned better about Radhe, Krishna and Rukmini today. Yeah? Can we hear it once for him again? Awesome. Are we ready to call up the next artist? Keep clapping for Harshil.
हाय एवरीवन, सो माई सेल्फ हर्षिल, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम गुजरात और पिछले 3 या 4 साल से मुंबई में रह रहा हूँ मैं. और ये हैबिटेट पे मेरा सेकंड टाइम है. ओवरऑल आई गेस 6th या 7th टाइम आई एम परफॉर्मिंग. सो I'll be performing poetry. तो जब मैं बोलूँगा कि क्या वो बात, तो आप लोग को बोलना है कि पुरानी है. जब भी मैं पोइट्री में आएगा क्या वो बात, उसके बाद आपको बोलना है कि पुरानी है. बराबर. मैं आज अकेला बैठा हूँ जब मैं सोचता हूँ तब क्या वो बात. वो हर बात पे तेरा मुस्कुराना, वो बात बात पे तेरा रूठ जाना और मेरा तुझे हर बार मनाना, क्या वो बात. वो तेरा मुझे जोर से गले लगाना, अंधेरी रातों में मेरा हाथ थामना, क्या वो बात. तेरा वो सज धज के आना, तेरी वो जुल्फ़ों का तेरी आंखों पे आना और मेरा उसे प्यार से हटाना, क्या वो बात. हाँ वो बात पुरानी है. वो लंबी रातें पुरानी है, वो खुली मुस्कुराहट पुरानी है, वो आशिकी पुरानी है, वो आंखों की शरारतें पुरानी है, वो दिल पर क़यामत पुरानी है, वो तेरे आने की चाहत भी पुरानी है. ये तो हुई पुराने की बात, तो नया क्या कि ये भीगी भीगी रातें नई नई है, तेरी ये बेरुखी नई नई है, हमारे हाथ में ये शराब नई नई है, आंखों में शिकायत नई नई है, ये झूठी तसल्ली नई नई है, तुम्हारी ये रंजिश नई नई है. नई है ये मंजिल, नया ये रास्ता, नहीं है साथ तू नहीं तेरा वास्ता. ये पुरानी रात डल जाएगी, कल हंसी सुबह निखर आएगी, माना कि तू मेरे साथ नहीं होगी पर मेरे गीतों में तो सदा मेरे पास आएगी. तो सेकेंड पीस गोस लाइक कि उससे प्यार कैसे ना करूं, कि उससे प्यार कैसे ना करूं, वो जाए तो उससे प्यार कैसे ना करूं, कि उससे प्यार कैसे ना करूं, वो जाए तो लगता जैसे जा रही जान मेरी, वो आए तो लगता जैसे आ रही बाहर इस जहाँ में. क्या कमी है उसमें, उसका चेहरा जैसे खिलता गुलाब, उसकी जुल्फ़े जैसे समुद्र की लहरें, उसकी बातों में जो उलझन है वो इस जहाँ में कहाँ, उसकी आंखों में जो नशा है वो मैं खाने में कहाँ, उससे पहली मुलाकात जैसा दिन कहाँ, मेरे में जो बात है वो रकीब में कहाँ, उसमें जो बात है वो किसी और में कहाँ. और थर्ड जो पीस है वो मेरे एक बहुत ही मनपसंद लेखक है जिनका नाम है फैज़ अहमद फैज़. तो उनका लिखा हुआ है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शाए हया, तेरा गम है तो गम देर का झगड़ा गया है, तेरी सूरत से आलमों में बहारों को सवा, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा गया है. तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था कि यूं हो जाए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा. थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम ऑन द स्ट्रीट. Say yaar Harshit, you performed very well. Only thing is while performing, why were you all like? मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब सिर्फ ऐसे ऐसे करके you were irritated with yourself. बीच में you did this, I thought you were gonna cry. But nice. Can we have another round of applause for it? I think it's crazy when people come and perform their written pieces on the mic. It's probably the best thing because that is a window to their world. And as long as you can get a peek of people, it's almost like reading a book quite literally. Do you agree? Yes. Yeah? True. Bro, what's your name? Anurag. Anurag. Do you write? I do. Okay. Are you performing? Very soon, once I'm done with my piece. Oh, lovely, lovely. Great, great, great. Shall I do one piece before I call the next artist? Are we up for it? Yes. Cool. This morning wasn't the usual. Winters, the gloomy winters still seemed asleep, unable to wake up and walk out of the blanket of words. Words filled with thoughts from last night. Thoughts of she noticing me, of she trying to have up to 2 stories of a conversation. For now, this is just a structure. This shall either turn out to be a museum with words and poems written by me describing you,
or we both could call this a home. With my words of love and your promise to care. The floor built of my love and the ceiling of your trust. The walls will look like the morning freshness in your face. I shall be the windows protecting its beauty, while you can be the walls supporting these windows. We will have a bedroom beautified by our ugly scars, where we make love with our vulnerabilities every night. We will lay beside each other, shoulder each other to form a bed to peacefully lay our heads in the warmth of each other's company. We will also have a storeroom filled with the baggage of our past. At times, visit to realize we have replaced them with newer fights. At times, revisit to realize we have cleaned this place. Whatever is left is just bouquets received on birthdays and anniversaries. We will also have a kitchen, resonating of our fun and laughter. The recipes would be a blend of our experiences and experiments, where I will add the spice to your sweet at times, you will add the bitter to my bland at times. Sometimes we both will spice it up. Time and again, the cobwebs of doubt and the dust of insecurities will cover these rooms. But we will ensure we spend enough time cleaning these rooms, knowing each other better, because I want to protect every souvenir you've brought along with yourself, everything that you're made up of. One day, we will stand at the door of this structure and look at this beauty that we have built with tears in our eyes and a smile on our face. That day, my hope will smile back at me. Imagine, without having you, I have built a home. The day I have you, we shall call this a monument. Thank you. Are you guys having a good time? Yeah? Sunday afternoon seems worth? Lovely. Okay, are we ready for the next artist? Can we start clapping for Varun? Hey, my name is Varun, and I'm performing for the second time over here. And my poetries are not bit deep, but have great meaning. Okay, so this is a lovely one. So it goes like, वो छुपाते नहीं हैं, वो छुपाते नहीं हैं, बस बताते नहीं हैं. दिलों के राज वो लिखते हैं पर कभी सुनाते नहीं हैं. आँखों में उनके जज्बात के समुंदर है पर लब पे खामोशी का सहारा नहीं. वक्त ने सिखाया उन्हें चुप रहना और लोगों ने कह दिया ये तो बेपरवाह है. वो हंस देते हैं तकलीफ छुपा के, किसी को महसूस भी नहीं होने देते. जो दिल से चाहते हैं उनसे दूर हो जाते और फिर खुद से ही लड़ते रहते. वो छुपाते नहीं हैं, बस बताते नहीं हैं. हर लफ्ज़ उनका एक कहानी है. जो समझे उसके लिए वो किताब है, जो ना समझे उसके लिए पहेली. कुछ लोग छुप जाते हैं, कुछ खुद से खो जाते हैं. ना छुपते हैं ना मिलते हैं, बस महसूस होते हैं. हर कहीं हर वक्त बिना कुछ कहे. So second one is अनदेखा अनसुना. So this is, it goes like, it's a small line. उन्होंने मुझे कभी अनदेखा नहीं किया. सच्ची कहूँ तो उन्होंने कभी मुझे देखा ही नहीं. उन्होंने मुझे गलत नहीं लगने दिया, पर सच भी यही है कि उन्होंने कभी मेरा सही देखा ही नहीं. And this one I wrote when because of my friend,
and she might be watching this, so she will understand. She told me once we had a fight, and I lately understood कि I had to understand her and not make her understand. So you know, usually what happens during lot of relationships कि वो break कहाँ होते हैं कि person just keeps out saying things कि you know, but that is not the right thing. I feel कि you should listen and just let this another person be on their own, and we should understand rather. So उस पे ही मैं लिखा है, बस समझो ना समझाओ. मैं चाहता था तुम समझो मुझे, पर तुम समझाने लगे. जो पल दिल से गुजरने चाहिए थे, तुम उसे दिमाग से तोड़ने लगे. मैं खामोशी में जवाब ढूंढ रहा था और तुम शब्दों को बोझ रखने लगे. मैं चाहता था हम दोनों एक ही पंक्ति हो जाए, पर तुम हर लम्हे को अलग अलग परखियों में बांटने लगे. काश तुमने एक बार मेरी आँखों की बात पढ़ी होती, तो तुम्हें समझ आता कि हर मुस्कुराहट समझानी नहीं जाती. कुछ एहसास बस महसूस किए जाते हैं, उन्हें अल्फाजों की ज़रूरत नहीं होती. मैं तो रिश्ते को संभालने आया था, पर तुम उसे समझौता बनाने लगे. मैं दिल लेकर खड़ा था सामने, पर तुम हर बार दलील बीच में रखने लगे. और फिर हम दोनों वैसे ही रह गए. मैं चाहकर भी कह ना पाया, तुम सुनकर भी समझ ना पाए. That's all. That's my time. Thank you. Very well read, yeah, very well read. You have a damn sweet voice. Can we hear it again for him? Nice. Oh, so we have come down to the fag end of the show. We have one last performer. Since we were at the topic of Radha Krishna, Rukmini Krishna, and millennial love and Gen Z love, shall I do another piece? Are we game for it? Yes. Yeah? Nice. Can I have a nice round of applause? So this one's called I'm Afraid You Don't Find Lovers These Days. I'm afraid you don't find lovers these days. In the period of freshly cut vegetables, peeled pomegranates and de-seeded melons, I'm looking for someone to accompany me through cutting open a watermelon from the beginning up to preparing the entire fruit salad. But I'm afraid you don't find lovers these days. In the period of instant messages, tweets and Insta reels, I'm looking for someone willing to narrate their day, write me an elaborate note, sometimes unable to contain sharing the musings of the mundane. But I'm afraid you don't find lovers these days. In the period of intellectual stimulations, iPhones and anxious ambitions, I'm looking for someone willing to be silly, share bizarre imaginations, and hold my hand without worrying about being left behind. But I'm afraid you don't find lovers these days. In the period of AP Dillon, Shubh and Badshah, I'm looking for someone willing to drink through a ghazal night, cling onto the shairis, and share their Chand Raat with me. But I'm afraid I am the only one looking out. In the period of situationships, dolls and AIs, everyone has found their compromise, while I sit with an open heart and hope. And an open heart and hope is only a tourist attraction for most people. It is fun till you don't have to witness the wear and tear of this place, till you don't have to contribute to its restoration. It is the rom-com after the end credits roll up. It is the boring camaraderie of every day. It is the calm after the storm. It is the silence without any suspense. It is the actual story. Hence, I'm afraid you don't find lovers these days. Thank you. Do you guys agree? You don't find... How many people here are in love? Wow. One. Okay, 3 people. Man. You know, I think if you would have asked this question 10 years ago, at least 10 boys would have raised their hands. They are in love. Whether the girl knows it or not is a different thing altogether.
Like back in college, like मेरे को प्यार हो गया है. It was like that. But now people don't raise their hands only. Okay, so on a serious note, how many people think that it's difficult to find lovers these days? One person in love has said, 2 people who are in love have said it's difficult to find love. Nice, interesting. How many people are on dating apps here? Do people not want to reveal it, or none of you are on dating apps? Oh wow, there's no one here on dating apps. Amazing. No, because I mean, I am on dating apps, obviously, but the nature of that is pretty transactional. Don't you guys feel? The birth of this piece was just something like that. I'm afraid you don't find lovers these days because dating apps are very, very transactional. Like, why are you here? I'm here for this. What are you doing? This is what I'm doing. That's it. You never have the adventure of knowing the person very well and all happening very great. Do you agree? I mean, I know so many people who actually gotten married to someone they met on a dating. Oh yeah, that's there. True. I mean, where is that happening? Which app is that? Clearly, the questions I've answered on the dating app is wrong. But anyway, so are we ready for the last performer? Keep clapping because I'm going to read their name and come back. Nice, I remember. Oh, nice. You people are amazing that you have still been clapping. I really appreciate that. Can we continue for Yogesh? Yeah? हेलो, आज मुझे लेट हुआ क्योंकि मैं गोवा से आया हूँ सीधा यहाँ. कितने लोगों को मराठी में पोइट्री सुनना पसंद? मराठी सुनना चाहोगे? मुझे ऐसे लगता है कि मराठी लैंग्वेज है ना, जिससे कोई अदर लैंग्वेज जुड़ जाए तो वो लैंग्वेज और खिल जाती है या उसमें और मज़ा आने लगता है. एक गज़ल सुना रहा हूँ मराठी में कि मूव ऑन हो म्हणतात योगी 4 लोक, मूव ऑन हो म्हणतात योगी 4 लोक, किती आठवतात योगी 4 लोक, डॉक फक्त आठवणींचा कागद आहे, डॉक फक्त आठवणींचा कागद आहे, होतात का की पॅड योगी 4 लोक. आणि मेल ड्राफ्ट डेडलाईन पूर्ण करून मरून जा, मेल ड्राफ्ट डेडलाईन पूर्ण करून मरून जा, कास पासचे सॅड योगी 4 लोक. आणि अगं तुझ्या माझ्यामध्ये बघ किती गॅप आहे, अगं तुझ्या माझ्यामध्ये बघ किती गॅप आहे, ते हळूहळू भरणार योगी 4 लोक. आयुष्य आहे तिची शॉपिंग बॅग म्हणजे, आयुष्य आहे तिची शॉपिंग बॅग म्हणजे, चायला नुसता फॅड योगी 4 लोक. तो ये मराठी था. बहुत ऐसा कॉरपोरेट जॉब हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया जॉब और मैंने लिख डाला या कि एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, उर्दू हिंदी, अर्ज़ किया है. अगर भटकी न होती भरी जवानी, अगर भटकी न होती भरी जवानी, तो फिर बनती न काबिल ये कहानी. अगर भटकी न होती भरी जवानी तो फिर बनती न काबिल ये कहानी. और यूं हुआ अंजाम शायर बन गया हूँ, यूं हुआ अंजाम शायर बन गया हूँ, सहरा में भटका मुसाफिर जावेदानी. और तुम भी मेरे मौत के काबिल बने हो, तुम भी मेरे मौत के काबिल बने हो, सीख लो बस मुझसे थोड़ी राय गानी. और सूखे स्याही में ज़रा बरसात भर दो, सूखे स्याही में ज़रा बरसात भर दो, काम आएगा मेरे आँखों का पानी. और ऊंचे कद के हो तो ऊंची सोच रख लो, ऊंचे कद के हो तो ऊंची सोच रख लो, कैसे बनोगे तुम मेरे महबूब सानी. और वो मेरे बाहों में गुजरी. ये बहुत प्यारा शेर, मुझे बहुत पसंद है. आपको कैसे लगेगा मुझे पता चलेगा अभी कि वो मेरे बाहों में गुजरी शाम सी थी, वो मेरे बाहों में गुजरी शाम सी थी, और सर्द रातों में खुदा की मेहरबानी, सर्द रातों में खुदा की मेहरबानी.
शुक्रिया। और एक गज़ल सुनते हैं कि तुम तो बड़ी जज्बाती हो, तुम तो बड़ी जज्बाती हो, कितनी भटक जाती हो, तुम तो बड़ी जज्बाती हो, कितनी भटक जाती हो, मेरे आँखों की रोशनी मुझको क्यों भटकाती हो, मेरे आँखों की रोशनी मुझको क्यों भटकाती हो, मैं आवारा मारा फिरता हूँ, मैं आवारा मारा फिरता हूँ, तुम तो एक शहज़ादी हो, मैं आवारा मारा फिरता हूँ, तुम तो एक शहज़ादी हो, चार लफंगे यार बनाए, हाँ तुम तो इसकी यादी हो, चार लफंगे यार बनाए, तुम तो इसकी यादी हो, पर तुम में वो बात नहीं है जिससे मेरी शादी हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी क्विक अनाउंसमेंट है कि आने वाले 19 दिसंबर को मेरा शो है दादर शिवाजी नाट्य मंदिर, और वेन्यू चेंज होके कुछ और भी हो सकता है, मैं मेरे प्रोफाइल पे अपडेट करता रहूँगा, पर ज़रूर आइएगा। क्या कहने शेरो शायरी की एक प्यारी गज़ल नाइट होने जा रही है, सो आप सभी वहाँ पे रहोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। शुक्रिया। मराठी ऐकून खूप छान वाटलं. How many Maharashtrians here? Okay, how many people understand Marathi? Oh, nice. For those who don't, try to get it, not for any political reason, because the language is just too beautiful when it comes to poetry and literature in Marathi. It's very, very beautiful. You know, in fact, the first movie which I watched and I cried was a Marathi movie called Nata Samrat, which is one of the most renowned movies also. So you should listen to it. Back in the day, like pre-COVID and all, there used to be an open mic that used to happen in Thane. And over there, we used to have a lot of Marathi poets come and perform over there. Simple pieces, like there used to be these old people who used to come, you know, cute oldies, matlab they'll be like 60, 62 and all, they'll come with this nice diary and they'll be like, this is my 300th poem. And nicely they'd read it. And they are those baby boomers, okay? So diligent people. In one diary, they have everything neatly written. So it was a damn cute expression, number one. And number two, it was also extremely adorable to watch them perform all those things with the amount of zeal that they had. And they were simple poems. But can we hear again for Yogesh? You kind of refreshed that memory for me, because amazing Marathi poets used to come over there. Anyway, so with that, we come to the end of this afternoon. Can we once hear it for the Habitat? Because I think it's commendable that they do this every week, I think thrice every week, and give everyone a chance. Can we hear it for all of you guys, please? You guys have been such sport and amazing performers. Please keep coming. My name is Krishna here. You can find me on Instagram. I have a show coming up, but it's not in Bombay. So if you have friends in Bangalore or Pune, please spread the word. It'll be very helpful. It's called Letters. And yeah, I think we are, should we take a photo? Okay, so everyone just come up.